We are going to continue with chapter number 12, which is kinematics of a particle. And the topic which we are going to cover in this week lectures are basically these two topics. So today we are going to start with curvilinear motion, and we are going to discuss the kinematics of a particle in terms of its cylindrical components. So basically, you people are familiar with polar coordinates r and theta, which you have already studied in metric and FSC physics or maths. So today we are going to discuss the same polar coordinates, and we are going to extend it in 3 dimensions as well. So they would become cylindrical coordinates, and we are going to discuss the kinematics of a particle which is traveling along a curved path in terms of its cylindrical coordinates. Moreover, then in tomorrow's lecture, we are going to continue with this curvilinear motion, and then we are going to cover this second last topic of this chapter as well, which is absolute dependent motion analysis of two particles. So these are the two topics which are going to be covered in this week's lecture, and inshallah next week we are going to cover the last topic of this chapter, and then we will start the kinetics of a particle. Okay, so starting with today's lecture, which is curvilinear motion, cylindrical components. Now, before moving on to the kinematics of a particle in terms of cylindrical components, let us first of all understand what these coordinates are. Although you people are familiar with these coordinates r and theta at least in metric FSC, but we are going to revise these polar coordinates once again, and then we are going to extend it to 3 dimensions. So, path of motion of a particle can sometimes be expressed in terms of its cylindrical components, which are r, theta, and z. However, if the particle is constrained to move within a plane, then polar coordinates r and theta are going to be used for defining the kinematics of a particle. So if the motion is occurring within a plane, then r theta coordinates are going to be enough for defining the kinematics. However, if the motion is occurring in space, that is the third dimension is also involved, the third axis is also involved, so then we are going to include this z-axis as well. Now this z-axis is similar to the z-axis which we have already considered in the xyz coordinate system. That axis is going to be included whenever the particle is having space motion in space rather than the motion in plane. Okay, first of all, how we are going to define these coordinates r, theta, and z. First of all, the location of the particle can be specified by using both the radial coordinate r, which extends from the particle, which extends outward from the fixed origin O to that particle, and the transverse coordinate theta, which is the counterclockwise angle between a fixed reference line and the r-axis. Now take a look at this figure which is shown to you. We have a particle which is traveling along this curved path. So this is the curve along which this particle is moving. At any particular instant, this particle is located at the position P, which is shown to you here. So in order to define the position of this particle, you need to know two things. The first one is what is going to be the radial coordinate, which is being defined as the vector which is starting from a fixed origin to that particle's location. So this is the radial coordinate being represented by vector r. The second one is the transverse coordinate, which is theta. It is the angle between some fixed reference line, which is this line here in this case, and the angle is being measured from the fixed axis to the r-axis in a counterclockwise direction. So this is the transverse coordinate theta. So this is how we define these two coordinates, the radial coordinate, which is represented here by r, and the transverse coordinate, which is being represented here as theta. So these are the two coordinates r and theta. Now extending these coordinates towards their axis, we are going to define two mutually perpendicular axes: the radial axis, which is r-axis, the transverse axis, which is the theta axis. How these axes are being defined? First of all, coming to the radial axis, the radial axis is being defined to be the axis which is defined by extending this radial coordinate r. So once we extend this radial coordinate r, we are going to get the radial axis, which is being represented by r axis here. The transverse axis, which is theta axis, is defined perpendicular to the radial axis at that instant. So perpendicular to the radial axis is this particular axis, which is defined as theta axis. The positive direction of radial axis is being defined using the unit vector ur, which is shown here. The positive direction of transverse axis is defined perpendicular to this radial axis at 90 degrees in a counterclockwise direction, and that positive direction is designated by the unit vector u theta. So just summarizing this whole thing once again, कि हमने किया क्या है कि हमने कहा है कि particle जो है, it is traveling along a curved path, and in order to define two mutually perpendicular axes for this particle's kinematics, we first of all define a radial coordinate, which is defined as the coordinate starting from some fixed origin to that particle position. So this is the radial coordinate r. Extending this radial coordinate would give us the radial axis, which is the r axis.
and its positive direction is designated by the unit vector UR. The transverse coordinate is being defined to be the angle between some fixed reference line and this R axis in a counterclockwise direction. So this is the transverse coordinate, which is theta. The transverse axis is defined perpendicular to this radial axis, and its positive direction is going to be in a counterclockwise direction at 90 degrees from the R axis, and that direction is designated by the unit vector u theta. So these are the two mutually perpendicular axes, R and theta axis, which are going to be used for defining the kinematics of a particle in terms of its cylindrical components. So I hope that these axes are clear to all. किसी को इन axes की definition के हवाले से कोई doubt? Okay, so once the particle has moved from its current location P to say a new location P dash, so this is the new location P dash, and accordingly for that new location, this is going to be the radial axis and this is going to be the transverse axis. In other words, at each and every instant, this radial axis as well as this transverse axis changes its direction as shown to you. Similarly, if the particle has moved to this location, this is going to be the radial axis, and perpendicular to that radial axis is going to be the transverse axis. So since the axes are changing at each and every instant, therefore these unit vectors UR and U theta will also undergo directional changes at each and every instant. Is it clear to all of you? The axis system is clear to all of you, so that we can move on to the kinematics. कोई एक स्टूडेंट जवाब दे दे. Okay, so now moving on to the kinematics of particle along in terms of its cylindrical components. So starting with position, in order to define the position of this particle in terms of its r and theta coordinates, since this position vector r is used to define the position of this particle, so we can write that this position vector r is going to be of the form r vector equal to r u r, where this small r represents the magnitude of this vector, that is the length of this vector from O to P. This is going to be the magnitude of this position vector r, and unit vector UR is going to define the direction of this position vector r. So overall, r vector is going to be completed by r UR, where small r represents its magnitude, which is the length of that vector, and UR represents its direction. Now, as far as the velocity vector is concerned, in previous cases as well, in order to find out velocity, what we did was we differentiate this position vector with respect to time once. So in order to find out this velocity vector v, we are going to differentiate this position vector dr by dt. So we are going to differentiate this vector with respect to time, or it would become d by dt, and r, as we have written it, it is going to be r u r. So we are going to differentiate this position vector once in order to find out the velocity vector. Now, if we take a look at this position vector, we are going to notice that there are two variables which are involved in this position vector. One is r, the other one is ur. So once we are writing this velocity vector v, it is going to be d over dt r ur. Can any one of you tell me how we are going to differentiate it? Any idea? Is r changing with time? The magnitude of position vector r, is it changing with respect to time? No, sir. Why? If this particle has moved here, then this is going to be the new. ठीक है, तो जब भी कर्व में ट्रेवल कर रहे हैं और आपने उस कर्व को, यानी एक प्योर सर्कुलर कर्व नहीं है, और अगर इन केस के एक प्योर सर्कुलर कर्व भी है, तो आपने उसका जो ओरिजिन है वो सेंटर पे डिफाइन नहीं किया हुआ, then r is going to change at each and every instant. The magnitude of this position vector, the length of this position vector is going to change at each and every instant. So this r is basically a function of time. यानी हर instant पे it is going to change. What about this unit vector ur? Is it changing with time? Yes, sir. As we have discussed earlier that जब आपका पार्टिकल अगले इंस्टेंट पे जाएगा, तो ये आपका चूंकि एक्सिस चेंज हो जाएंगी, तो यूनिट वेक्टर आपका ur से हो सकता है ur डैश बन जाए. इट मींस कि इसमें डायरेक्शनल चेंजेस आएंगी. सो इट इज अगेन a function of time. So you have two variables r and ur, both are changing with respect to time. So how you are going to differentiate it? Rule. You are going to apply the product rule, which says कि जब आपके पास दो वेरिएबल हैं a and b and both of them are changing with respect to time, then once you differentiate it, you are going to get a b dot plus b a dot. यानी आप एक को कांस्टेंट रखेंगे दूसरे का डेरिवेटिव, और फिर दूसरे को कांस्टेंट रख के पहले का डेरिवेटिव. तो the same product rule is going to be applied here. So once you are differentiating r ur with respect to time, it is going to be r dot ur, यानी आपने ur को कांस्टेंट रखा, r का डेरिवेटिव जो है it would become r dot.
सेकेंड टर्म में आपने r को कांस्टेंट रखा, यूनिट वेक्टर ur का डेरिवेटिव it would become ur dot. So the velocity vector is going to be equal to r dot ur plus r ur dot. Now this velocity vector involves the derivative of unit vector, which is this vector ur dot. How you are going to find the derivative of this unit vector? Do you remember जब हम normal tangential coordinate system कर रहे थे तो we found the derivative of unit vector along the tangential axis, ut dot हमने find किया था. Do you remember the procedure? कुछ याद है वो प्रोसीजर हमने ut dot जब फाइंड किया था? So we are going to apply the same procedure, same method for finding the derivative of a unit vector along the r axis. वो किस तरह करेंगे, एक दफा दोबारा रिव्यू कर लेते हैं हमने किस तरह फाइंड किया था. So at one instant we say that this particle is located at position P, where the unit vector is defined as this vector ur. At the very next instant, when delta t approaches to 0, again I am drawing it in an exaggerated manner. So at the very next instant, at t plus delta t, this particle is located here and its new unit vector is represented as ur dash. Now if we want to find out how much change, directional change that has occurred in this unit vector once this particle has moved from P to P dash, we are going to consider this triangle. This was the original unit vector ur, this was our r axis, this was the new unit vector ur dash when this particle has moved to a position P dash. So this vector, which is delta ur, it basically represents कि इस यूनिट वेक्टर में कितनी डायरेक्शनल चेंज आई है when this particle has moved to the next instant in time delta t approaches to 0. So we are interested in finding the magnitude and direction of this vector delta ur. So as far as this delta ur vector is concerned, ये आपका जो वेक्टर है, चूंकि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड है जिसको मैं m से डिनोट करता हूँ, इसका कोई ना कोई डायरेक्शन है जिसको मैं d से जो है वो डिनोट कर रहा हूँ. Now in order to find out the magnitude of this unit magnitude of this vector delta ur, we are going to consider this approximate right angle triangle, and we say that this angle which is defined to you here as delta theta or d theta. So sine of this angle should be equal to perpendicular over hypotenuse. So sine of delta theta should be equal to perpendicular, which is delta ur, divided by base, which is ur dash. I am writing it here as well. Sine of delta theta should be equal to perpendicular, which is delta ur divided by ur dash. Now since ur dash represents a unit vector, so this ur dash would be equal to 1. So delta ur would become equal to 1 into sine of delta theta. And since we are considering very small angles, so for smaller values of this angle delta theta, sine of delta theta would be approximately equal to delta theta. So we can write overall that this delta ur is going to have a length or magnitude of delta theta, and as far as its direction is concerned, since this direction would approximately be similar to this direction u theta, so we can write or we can complete this vector delta ur to be equal to delta theta into u theta, where delta theta represents its magnitude and u theta represents its direction. So in terms of derivative, we can write this unit vector ur dot should be equal to theta dot u theta. Is it clear to all of you? ये ur dot समझ आ गई? हमने वही प्रोसीजर अप्लाई किया है जिस तरह हमने टेंजेंशियल एक्सिस के अलॉन्ग जब यूनिट वेक्टर फाइंड कर रहे थे तो डिटरमिन किया था. So overall this velocity vector would now become r dot ur plus r ur dot. इस r ur dot को मैं चेंज कर लूंगा जो अभी हमने डेरिवेटिव फाइंड किए थीटा डॉट u theta से. So the overall velocity vector would become v vector. So the overall velocity vector would now become v vector equal to vr ur plus v theta u theta. That is, the velocity vector will have two components. The first one is the radial component of velocity, which is represented by this term. The second one is the transverse component of velocity, which is represented by this term. जहां तक ताल्लुक radial component का है, तो this radial component of velocity will have a magnitude of r dot and its direction is specified by the unit vector ur. The transverse component of velocity would have a magnitude of r theta dot and its direction is specified by the unit vector u theta. So overall, the velocity vector would be a vector sum of vr and v theta. So we can write v vector to be equal to vr vector plus v
vr vector plus v theta vector. So this is going to be the overall velocity vector, that is the vector sum of radial and transverse component of velocity. अगर हम इसको फिगर पे देखना चाहें तो by definition the velocity vector is tangent to the curve at each and every instant. बेशक आप कोई भी coordinate system consider कर रहे हो, the velocity vector is always going to be tangent to that curve. लेकिन चूंकि आपकी जो r और theta axis हैं, they are not defined tangent to the curve, तो आपने जब इसको resolve किया r और theta axis के along, तो ये दो components आपके velocity के आ रहे हैं. One is the radial component of velocity which is r dot ur, the other one is the transverse component of velocity which is r theta dot u theta, and the overall velocity is going to be the vector sum of radial and transverse component. अगर आपसे मैं उस overall velocity का magnitude कहूँ तो वो magnitude आप इसके दोनों components को square करके sum करके under root लेंगे तो you will get the overall magnitude of that velocity vector. Okay, so कोई चीज जो आपको velocity के हवाले से समझ ना आई हो, कोई component, कोई direction, कोई magnitude आप पूछ सकते हैं. So velocity is clear to all of you. कोई एक स्टूडेंट जवाब दे दे. Yes, sir. ओके, चले मेरे आपसे एक सवाल. आपको यहाँ वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स मिल रहे हैं जबकि एंटी कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेलोसिटी का एक कंपोनेंट मिल रहा था. वजह क्या है उस वहां एक मिलने की और यहाँ दो कंपोनेंट्स मिलने की? सर यहाँ पे कर्व है इस वजह से. यहाँ पे क्या है? कर्व करके जा रहा है, जरा थीटा भी है. यहाँ पे आपकी जो एक्सिस डिफाइन हुई है आर और थीटा, वो चूंकि टेंजेंट टू द कर्व डिफाइन नहीं हुई और वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट होती है, इसलिए आपको वेलोसिटी के आर और थीटा दो कंपोनेंट्स मिल रहे हैं अराउंड आर एंड थीटा एक्सिस. वहां आपकी जो टेंजेंशियल एक्सिस थी वो डिफाइन ही टेंजेंट टू द कर्व हो रही थी, तो इसलिए आपकी सारी की सारी वेलोसिटी वेक्टर उसी टेंजेंशियल एक्सिस के अराउंड था और वहां आपको एक सिंगल कंपोनेंट मिल रहा था वेलोसिटी का व्हिच इज अलोंग दैट टेंजेंशियल एक्सिस. इज इट क्लियर टू यू ऑल? यस सर. चलें अब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं. इससे पहले जो दो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं जिसमें आपने एक्सेलरेशन फाइंड की है, एक्सेलरेशन आप किस तरह फाइंड करते हैं? हाउ डू यू डिफाइन एक्सेलरेशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और इन अदर वर्ड्स आप उस वेलोसिटी वेक्टर को एक दफा डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाती है. सो अगर मैं इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूं तो अगेन द प्रोसीजर इज गोइंग टू बी सेम, दैट इज द एक्सेलरेशन वेक्टर a इज गोइंग टू बी द rate of change of velocity, that is dv over dt, or we can write it as d over dt r dot ur plus r theta dot u theta. So किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे? कोई आइडिया कि हाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट इट? जी, एनीवन वॉलंटियर, हाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट इट? So फिर से प्रोडक्ट रूल लगा दें. फिर से प्रोडक्ट रूल लगा देंगे. ओके, वो फिर से प्रोडक्ट रूल कैसे लगाएंगे? अगर आप गौर से देखें, इफ वी कंसीडर द फर्स्ट टर्म इट इन्वॉल्व्स r डॉट ur. सो वंस यू टेक इट्स डेरिवेटिव, सिंस r वाज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो डेफिनेटली आपके पास r डॉट भी फंक्शन ऑफ टाइम होगा. इसी तरह ur की अभी हमने बात की, इट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो दो वेरिएबल्स हैं, दोनों विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहे हैं. सो वंस यू डिफरेंशिएट दिस टर्म, आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे. प्रोडक्ट रूल क्या कहते हैं कि एक कांस्टेंट दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा कांस्टेंट पहले का डेरिवेटिव. तो अगर आपने पहले से यू आर को कांस्टेंट रखा है, आर डॉट का डेरिवेटिव आप लेंगे तो इट वुड बिकम आर डबल डॉट. तो ये आपके पास एक टर्म आ जाएगी. फिर आपने किया क्या कि आर डॉट को कांस्टेंट रखा, यू आर का डेरिवेटिव लिया, इट वुड बिकम यू आर डॉट. तो ये तो आपके पास पहली टर्म से ये दो टर्म्स आ जाएंगी. व्हाट अबाउट द सेकंड टर्म आर थीटा डॉट यू थीटा? इसको किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे? How you are going to differentiate this? R is a function of time, theta is a function of time, u theta is a function of time. So आप प्रोडक्ट रूल क्या कहते हैं? सर इसमें वो तीन वाला बन जाता है, एक का डिफरेंशिएशन लेंगे, बाकी दोनों की नहीं लेंगे और इस तरह तीनों को कर लेंगे. नहीं, इस तरह दूसरे में दो टर्म्स में तीन बन जाएंगे. तो आपके पास a b c तीन वेरिएबल्स हैं, तीनों विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो चेंज हो रहे हैं. सो d by dt a b c क्या होगा? a b c डॉट प्लस a c b डॉट प्लस b c a डॉट, यानी दो को कांस्टेंट तीसरे का डेरिवेटिव, फिर दो को कांस्टेंट तीसरे का, फिर दो को कांस्टेंट तीसरे का. तो इन अदर वर्ड जब आप इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास से आप पहले r थीटा डॉट को आप कांस्टेंट रख रहे हैं तो आपके पास u थीटा डॉट आ जाएगा. फिर सेकंड केस में आपने r और u थीटा को जो है वो कांस्टेंट रखा तो आपके पास थीटा डॉट का डेरिवेटिव आ जाएगा विच इज थीटा डबल डॉट. फिर तीसरी टर्म में आपने थीटा डॉट और u थीटा को कांस्टेंट रखा, r का डेरिवेटिव आपके पास r डॉट आ जाएगा. तो ओवरऑल आपके पास
ये 3 टर्म्स आ जाएंगी। तो ओवरऑल ये 5 टर्म्स आपके पास आ रही हैं। इन 5 टर्म्स को हम यहाँ लिख रहे हैं कि ये वो 5 टर्म्स हैं जो कि अभी हमारे पास यहाँ ओके। तो ये वो 5 टर्म्स हैं जो कि हमें यहाँ नजर आ रही हैं, जो अभी हमने उन 2 टर्म्स को डिफरेंशिएट करके निकाली। तो आई होप कि ये 5 टर्म्स हर एक को क्लियर हैं। किसी को इन 5 टर्म्स के हवाले से कोई डाउट तो नहीं है, ताकि हम आगे मूव करें। ओके, अब इन 5 टर्म्स को अगर हम गौर से देखें तो इसमें 2 टर्म्स ऐसी हैं which involves the derivative of unit vector. One is this term which involves the derivative of unit vector along the r axis. The second one is this term which involves the derivative of a unit vector along the transverse या theta axis. ये ur dot ऑलरेडी आप इवेल्युएट कर चुके हैं जब अभी हम वेलोसिटी की इवेल्युएशन कर रहे थे। तो ur dot was equal to theta dot u theta, ऐसे ही है जी सर। Okay, now how we are going to determine the derivative of unit vector along the transverse axis? The procedure is again going to be similar. वो procedure क्या है कि हम कहते हैं कि suppose ये particle इस जगह से अगले इंस्टेंट पे यहाँ मौजूद है, so accordingly इसके रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सिस इसी तरह से मॉडिफाई होंगे। तो अगर ओरिजिनली आपका यूनिट वेक्टर u थीटा था, अगले इंस्टेंट पे यूनिट वेक्टर u थीटा डैश हो जाएगा। So those unit vectors are shown to you here at one instant. This unit vector is u theta. At the very next instant, when delta t approaches to 0, this unit vector becomes u theta dash. So basically this vector represents the change, the directional change that has occurred in this unit vector in time delta t approaches to 0. In order to evaluate this change delta u theta, since it is a vector quantity, it should have some magnitude, it should have some डायरेक्शन। वही हम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। जहां तक ताल्लुक इसके मैग्नीट्यूड का है, सो कंसीडरिंग दिस राइट एंगल ट्रायंगल एंड टेकिंग साइन ऑफ डेल्टा थीटा वुड गिव यू साइन ऑफ डेल्टा थीटा टू बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो उससे आपके पास जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा इस डेल्टा यू थीटा का, दैट मैग्नीट्यूड कम्स आउट टू बी थीटा डॉट, जिस तरह इससे पहले केसेस में आता रहा है। जहां तक ताल्लुक इसके डायरेक्शन का है, तो डू यू हैव एनी आइडिया कि डायरेक्शन किससे हम रिप्रेजेंट करेंगे? जी, any idea about the direction of delta u theta? तो इससे पहले है। हाँ ठीक है, देखें इससे पहले तक हम करते क्या थे, जब हम यहाँ यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे थे व्हेन वी वर डिस्कसिंग वेलोसिटी, तो हमने कहा था कि यू आर का डायरेक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर होगा टू द डायरेक्शन ऑफ यू थीटा। तो हमने डायरेक्शन के लिए यू थीटा जो है उसको इस्तेमाल कर लिया था। लेकिन अगर हम इस केस को देखें तो डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर डेल्टा यू थीटा वुड ऑलमोस्ट बी सिमिलर टू द आर एक्सिस बट टुवर्ड्स द नेगेटिव आर एक्सिस। तो हम जो है वो इसके डायरेक्शन के लिए माइनस यू आर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपके पास जो ये डेल्टा यू थीटा बनेगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू माइनस थीटा डॉट यू आर। तो ये आपके पास ओवरऑल चेंज इसमें आ रही है, डायरेक्शनल चेंज आ रही है इन यूनिट वेक्टर यू थीटा। सो कंबाइनिंग दिस डेल्टा यू थीटा की जगह आप जो है वो ये डाल लें, यू आर डॉट की जगह आप थीटा डॉट यू आर डाल लें, और यू आर की टर्म्स को एक जगह कर लें, यू थीटा की टर्म्स को एक जगह कर लें, तो आपके पास ओवरऑल जो एक्सेलरेशन आएगी इन टर्म्स ऑफ आर थीटा कोऑर्डिनेट सिस्टम, इट इज गोइंग टू बी वेक्टर ए आर प्लस ए थीटा। दैट इज द ओवरऑल एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी द वेक्टर सम ऑफ रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन ए आर एंड ए थीटा। जहां तक ताल्लुक ए आर का है, तो ए आर इज गोइंग टू हैव अ मैग्नीट्यूड ऑफ आर डबल डॉट minus r theta dot square and its direction is specified by the unit vector ur. जहां तक ताल्लुक ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन का है, तो द ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन वुड हैव अ मैग्नीट्यूड ऑफ r theta dot plus 2r dot theta dot and its direction is specified by the unit vector u theta. तो आपके पास ओवरऑल एक्सेलरेशन जो है उसके दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, वन इज द रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, द अदर वन इज द ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, and the overall magnitude of acceleration is going to be equal to ar square plus a theta square whole under root. So this is how you define the acceleration in terms of radial and transverse component. ये उसके वो दो components हैं, radial और transverse component, जिसका magnitude आपको दिखाया गया है, और ur और u theta इनके डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये 5 टर्म्स 4 में कैसे रह गई? पिछली स्लाइड पे हमने देखा था ये 5 टर्म्स आ रही थी, तो अब आगे जाते जाते ये 4 कैसे रह गई हैं? एक टर्म कहाँ गायब हो गई? सर एक उसको हमने यूआर को आई थिंक चेंज किया था, यूआर डॉट को।
तो वो 2 बन गया था। बेसिकली वो हमारे पास दो टर्म सिमिलर आ गई थी, तो आर डॉट थीटा डॉट वाली दो टर्म थी, तो वो 2 आर डॉट थीटा डॉट होगी, इसलिए वो 4 टर्म्स अब आपको नजर आ रही है रादर देन 5 टर्म्स. सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स. अब मुझे बताएं वेलोसिटी या एक्सेलरेशन या पोजीशन के हवाले से सिलेंड्रिकल कंपोनेंट्स या पोलर कोऑर्डिनेट्स में, अभी सिलेंड्रिकल पे तो हम नहीं, हम 2 डायमेंशन नहीं कर रहे हैं इसको, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स या आर और थीटा के हवाले से कोई चीज जो आपको ना समझ आई हो. सर ये डेरिवेशंस तो नहीं ना आएंगी, बस फॉर्मूले ही देखने हैं. डेरिवेशन सिर्फ आपको समझाने की हद तक थी. एज फार एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न, आपको न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे जिसमें इन फॉर्मूलों की एप्लीकेशन आती है, लेकिन समझाना इसलिए जरूरी था कि जिस तरह अभी आपने देखा इन्हीं दो टॉपिक्स में 2 दफा यूनिट वेक्टर के डेरिवेटिव इन्वॉल्व होते हैं, तो हो सकता है आगे भी कहीं जाके आपको यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव फाइंड करना हो, तो फिर ये तरीका हम अप्लाई कर सकते हैं व्हेनेवर यू वांट टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एनी यूनिट वेक्टर. ठीक है सर. ठीक है. Okay, so since we are talking about the radial and transverse coordinates, polar coordinates की हम बात कर रहे थे, इन्हीं polar coordinates को if we extend to 3 dimensions की हम कहते हैं कि the particle is not constrained to move within a plane, rather it is moving in space. तो उस सूरत में let us consider the 3-dimensional cylindrical components. हम कहते हैं कि ये पाथ जो है या प्लेन के बजाय एक स्पेस में जो है वो लाई करते हैं rather than in a plane. So in that case, अभी ओरिजिनली हमने जो फॉर्मूले देखे हैं वो आपके सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक के फॉर्मूले थे जो कि पोलर कोऑर्डिनेट्स आर और थीटा की टर्म में थे, 2 डायमेंशन की फॉर्म में थे, जिसमें पोजीशन वेक्टर आर यू आर था, वेलोसिटी वेक्टर आर डॉट यू आर प्लस आर थीटा डॉट यू थीटा था, और एक्सेलरेशन वेक्टर आपका आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर यू आर प्लस आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट यू थीटा था. तो यहाँ तक था. सो अभी तक आपने इसको ओरिजिनली 2 डायमेंशन में कंसीडर करते हुए इस तरह से पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर्स जो है वो मेंशन किए थे. मैं दोबारा रिपीट कर दूं, सिर्फ और सिर्फ अभी तक हम इन कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे विच इज अलोंग द आर एंड थीटा एक्सिस. नाउ लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल जिसमें हाइट भी चेंज हो रही है. इन अदर वर्ड्स दिस z कोऑर्डिनेट इज आल्सो चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. एक प्लेन में मोशन नहीं हो रहा, रादर ये z कोऑर्डिनेट भी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं. सो उस सूरत में फिर आपको z जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम के तौर पे डिफाइन होगा, जिसको आप इसी तरह यहाँ पोजीशन कोऑर्डिनेट में इंक्लूड कर देंगे. जहां तक ताल्लुक वेलोसिटी का है तो इसका जब आप एक दफा डिफरेंशिएट करेंगे इट वुड बिकम z डॉट यू जेड, या इससे पहले आप z डायरेक्शन में k भी इस्तेमाल करते रहे यूनिट वेक्टर, तो आप z डॉट k के तौर पे भी इसको मेंशन कर सकते हैं. इसी तरह एक और दफा इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन के लिए, इट वुड बिकम z डबल डॉट यू जेड या z डबल डॉट k के तौर पे भी आप इसको लिख सकते हैं. सो इफ यू आर कंसीडरिंग 3 डायमेंशन देन यू नीड टू ऐड these terms in your position, velocity and acceleration vector in order to complete those vectors. इसमें ये z डायरेक्शन वाली चेंजेस भी जो है वो आपने इनकॉर्पोरेट करनी है. अब मेरा सिर्फ आपसे एक सवाल है कि आपने ये z uz को जब इंटीग्रेट किया, सॉरी जब डिफरेंशिएट किया है, तो आपने uz का डेरिवेटिव क्यों नहीं लिया जिस तरह से पहले ur और u थीटा का आप डेरिवेटिव लेते थे? सर uz कांस्टेंट है. That's correct. आपके पास r और थीटा एक्सिस जो है वो तो इस प्लेन में हर इंस्टेंट पे चेंज होंगी जब ये पार्टिकल मूव करेगा, लेकिन z एक्सिस आपकी वही z एक्सिस है जो कि फिक्स है. इससे पहले आपने x y z कोऑर्डिनेट सिस्टम में किया है, तो जब z एक्सिस फिक्स है तो डेफिनेटली आपका जो यूनिट वेक्टर uz है जिसको आप k के तौर पे लेते हैं इससे पहले, वो यूनिट वेक्टर ना मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन में चेंज हो रहा है. यही वजह है कि ये एज अ कांस्टेंट के तौर पे एक्ट करे. आप z डॉट और z डबल डॉट को पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में इंक्लूड करेंगे, uz का अपना डेरिवेटिव आप नहीं लेंगे. Is it clear to you all? Yes sir. Okay, so this is how we can define the kinematics of a particle in terms of its cylindrical components. Now in the next step, आज की क्लास में तो नहीं क्योंकि आज ऑलमोस्ट 12-10 होने वाले हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि इससे रेलेवेंट जो न्यूमेरिकल्स हैं वो एक ही दफा हम कल जो है वो स्टार्ट करें. लेकिन जस्ट हम अगर समराइज करें, समराइज करने से ज्यादा अगर हम इसके प्रॉब्लम्स को देखें तो यू कैन हैव 2 different sets of problem relevant to this topic. In set 1, जो set 1 problems हैं वो किस तरह के आपको नजर आएंगे कि आपको both r is given to you as a function of time and theta is also given to you as a function of time. यानी both r and theta आपको as a function of time के तौर पे पता होंगे. अब इन दोनों में एज अ फंक्शन ऑफ टाइम के तौर पे अगर आपको पता है तो आप वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के फॉर्मूले देखें तो उसमें r से r डॉट r डबल डॉट इन्वॉल्व है, थीटा डॉट थीटा डबल डॉट इन्वॉल्व है. तो आप सिंपली इसको एक दफा डिफरेंशिएट करके r डॉट, एक और दफा डिफरेंशिएट करके r डबल डॉट फाइंड कर लेंगे. इसी तरह
इसको एक दफा डिफरेंशिएट करके थीटा डॉट, उसको एक और दफा डिफरेंशिएट करके आप थीटा डबल डॉट फाइंड आउट कर लेंगे और फिर ये वैल्यूज आप वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के फॉर्मूलों में डाल के वो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यूज डिटरमिन कर सकते हैं। तो सेट 1 इज रियली सिंपल, जिसमें आपको r और थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम के तौर पे नोन होगा। हाउएवर सेकंड सेट ऑफ प्रॉब्लम जो है वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। सेकंड सेट क्या है कि सेकंड सेट ऑफ प्रॉब्लम में आपको r एज अ फंक्शन ऑफ थीटा के तौर पे नोन होगा रादर देन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ r इज 1 प्लस से cos ऑफ थीटा, सो r इज गिवन टू यू एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। इन दैट केस आप इस पूरी इक्वेशन को एक दफा डिफरेंशिएट करेंगे इन ऑर्डर टू रिलेट r डॉट विद थीटा डॉट। सिमिलरली इसको एक और दफा इंटीग्रेट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इन ऑर्डर टू गेट r डॉट एज अ फंक्शन ऑफ थीटा डबल डॉट। लेकिन जब आप ये डिफरेंशिएट कर रहे होंगे इस इक्वेशन को, तो डिफरेंशिएशन के लिए क्या करेंगे, आपको r डॉट फाइंड आउट करना है विच इज dr बाई dt। आपको r एज अ फंक्शन ऑफ थीटा के तौर पे नोन है, तो क्या कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? जी एनीवन वॉलंटियर? सारे खामोश हैं। मैं सवाल को रिपीट कर देता हूं। मैं कहता हूं कि मेरे पास सेकंड सेट ऑफ प्रॉब्लम्स में r एज अ फंक्शन ऑफ थीटा के तौर पे डिफाइन होगा। फॉर एग्जांपल r इक्वल टू से 1 प्लस cos ऑफ थीटा, सो r इज डिफाइंड टू मी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। फॉर एग्जांपल 1 प्लस cos थीटा, जैसे फंक्शन में ले रहा हूं r इज 1 प्लस cos थीटा। अब मुझे फाइंड करना है r डॉट विच इज बेसिकली बाय डेफिनेशन r डॉट इज dr बाय dt। सो मेरे पास r डॉट dr बाय dt है, r एज अ फंक्शन ऑफ थीटा है, तो मैं dr बाय dt कैसे फाइंड कर सकता हूं? सर 1 प्लस cos थीटा को डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कैसे करूं? वो तो एज अ फंक्शन ऑफ थीटा गिवन है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम में कैसे करूंगा? सर बस थीटा के साथ ही शुरू कर दें। मतलब थीटा तो चेन रूल। I am going to apply the chain rule which is r dot is dr by dt, but since r is given to me as a function of theta, तो पहले मैं dr by d theta फाइंड करूंगा, फिर d theta by dt से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि d theta कैंसिल हो जाए और ओवरऑल मेरे पास dr by dt बचेगा। सो आई एम गोइंग टू यूज द चेन रूल फॉर दिस सेकंड सेट ऑफ प्रॉब्लम, जिसमें मेरे पास r एज अ फंक्शन ऑफ थीटा के तौर पे डिफाइन होगा। तो इंशाल्लाह कल वाली जो हमारी क्लास है उसमें हम इससे रेलिवेंट प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, सेट 1 से भी रेलिवेंट, सेट 2 से भी रेलिवेंट, और जिस तरह हमने शुरू में बताया कि कल हम जो दूसरा टॉपिक कवर करेंगे दैट इज गोइंग टू बी दिस टॉपिक विच इज एब्सोल्यूट डिपेंडेंट मोशन एनालिसिस ऑफ टू पार्टिकल्स। तो इसके प्रॉब्लम्स हम कल करेंगे कल वाली क्लास में।